तुम्हारा हिंदी का पेपर है ना मैम? आप कहाँ बैठे हो?
बच्चों को नीचे भेज दीजिए, बच्चा क्लैट वाले बच्चे हैं। हाँ, ठीक है मैम, गुड। एमसीबीसी कहाँ है? एमसीबीसी, एमसीबीसी वो बेटी ना लड़की साइंस कर रही है। वहाँ पे थर्ड फ्लोर। सर को बोलो यूनिवर्सिटी ने इधर लेक्चर लगाए।
जल्दी कैसे भैया को सचिन सर अभी आके बोले, मैं भैया को पूछी तो भैया वाले जा नाइट होल्ड है करेगी, उनको दिन वाले मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं। मेरी बेटी की वजह से मैं जाती, मैं तो नहीं जाती थी, मेरा आज फर्स्ट डे। हाँ ना, और इतने जल्दी हो गया मालूम नहीं क्या, नहीं तो मेरी 20 तारीख के बाद की डेट है। पता नहीं स्वप्ने को से मजे देती देती 1 मिनट फोन नहीं उठा ये। अरे वो थर्ड फ्लोर पे मैम वेट कर रहे ना तुम्हारा, तुम जाओ। हाँ पेट बोलने खड़ी की बात करी थी बेटी शायद, जाओ देखो हाँ कौन है, जाओ एक लड़की कोई अभी ना जाके पूर्णिमा मैम को भी चिल्लाऊंगी सही से, एक लड़की लोग लेके बैठते। पूर्णिमा मैम जाओ, हाँ जाओ। एक मिनट देखने दो नंबर 2021 और 2022 वाले हैं 2021 क्वेश्चन पेपर की मेरे पास नहीं है, मतलब 2022 का 2021 का टेस्ट वाले मिले तुझे, तेरे भैया को वहां मिला मॉक टेस्ट वाले मेरे पास ही है मैम, तेरे को वेबसाइट पे किया था नहीं, मेरे पास कौन सा जो क्लैट के वेबसाइट पे जो 2 ऑफिशियल मॉक्स है ना वो मेरे पास है, क्योंकि उसके लिए लॉगिन डिटेल्स रखते हैं, तो मैंने वही किया। आपके पास लॉगिन डिटेल्स नहीं करके मेरा, तो फिर उसके लिए वो वाले है मेरे पास, वो मैंने अटेंड नहीं कर लिया। उसका आपके पास पीडीएफ है, ये पीडीएफ भेजो अच्छा। हाँ फिर पीडीएफ, अगर इनके पास पीडीएफ वही है जो मेरे पास है, नहीं भी तो मेरा व्हाट्सएप लॉगिन है उसके अंदर आपके है क्या इसके बाद पीडीएफ? ऐसा वो बोले कि जो वेबसाइट पर वो वाला पीडीएफ मेरे पास है। मेरे पास सिर्फ 2 मॉक्स है जो क्लैट रिलीज करती है हर साल। Those 2 mocks are the ones that only those people release, and it's in the form of a website, not a PDF. So you can't download it. No, this is like 2022 ka paper, like actual paper. That's the closest reference you have because the paper pattern keeps changing. So this is the closest reference. Yeah. I mean, we don't even know for sure if this is the paper pattern they followed this year because mock mein aisa paper pattern nahi hai. The mock that they released this year, it's in a different pattern, like same content but different pattern. क्योंकि इसमें the thing is कि marks distribution and stuff कि per passage 5 questions, but mock में there are passages where there are 3 questions and there are passages where there are 7 too. तो फिर marks ऐसे equally distributed नहीं है जैसा expect किया था. It's basically like it's ranging like 12 से 15 वाले range में, 30 से 35, 40 से 45 वाले range. So there's no concrete like stuff कि इतना करना है तो इतना होगा. It's just है कुछ तो like that. Where is my phone? So how's your preparation going on till now? Preparation is okay? It's going. I don't know how. But It's going on. yeah. हुआ है पूरा cover हुआ है क्या पूरा? Again, there is no pura. Like, what is? नहीं, but the thing which you thought that I should complete these things and all like that. So have you completed those things? Not really. Kind of, I guess. Okay. Not a good answer. 5 days before the paper.
काम करना मेरा नंबर ले, मेरे को वेबसाइट शेयर कर, मैं करता हूँ डाउनलोड जो भी। हेलो, सर, क्या बोल रहे? कैसे हो? कैसे हो सर आप? कैसे? ये बस यार, मैं भी क्या देती थी? हट जा रहे बस भी शादी तो मेरी मेल नहीं, मेरे वेबसाइट है और इसके लिए लॉगिन करने के लिए डिटेल्स वगैरह लगते हैं। और पूरी अभी चीज देखो Conference मैंने out अगर है। अटेंड सैंपल पेपर किया ना तो सैंपल पेपर टाइमिंग के साथ चालू होता है और फिर जैसे ही वो खत्म हुआ वो हो जाता है। फिर अभी इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐसे ही अप्रैल इधर में ही के मार्क करो, आसपास। इधर ही जैसे ही सबमिट किया खत्म पेपर वैसा है। अरे यार बहुत क्लोज था इस बार। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम और तगड़े बहुत सारे भेजता है, तैयारी अच्छा करके भेजता है। और फिर 2 बार करना हाँ? पड़ेगा क्या बदल गया? क्योंकि फिर क्वेश्चन जैसे नीचे वाले हाँ? वाले में भी है और अंदर यहाँ से पैसेज भी वैसा नहीं दिख रहा। है। तुम तो बुरा नहीं हो बे। पेरेंट्स मीटिंग में थी परसों ना, और कंप्लेंट की है। नंबर लेना, मेरे को शेयर कर दो। तभी आना चाहिए था। जो अपने भी कर दे। अच्छा। हाँ ठीक है, वेबसाइट शेयर कर। चलो सर आज लेक्चर ले लो। आज मैं कुछ दिन आगे से 4 बजे तक। हाँ हाँ 4 बजे। रिवाइज चलो सर। Sheikh Mujibur Rahman was assassinated on. Shit. बोला जाए। हाँ Yes. No way. No, but I can explain it to you. We can just go through one by one. Yeah. The thing is, I kind of like one of those things कि पहले तो all the names and stuff of the people who are involved in like major things right now. Like Okay. Okay. if finance is related, then I need to know like दूसरे countries के people. Because it's so annoying. I saw this one question in a mock where they literally messed up like 4 नाम दिए थे. 2 of those names were same names. मतलब दो same इंसान के नाम, Okay. same surname, same name. Okay. Choose the spelling they had changed. And they're like, अभी बताओ. A and C में से कौन सा? Like, bitch, man. क्या मिल रहा है करके? Okay, जो अभी ये पेपर हमको जो दिया है इन्होंने, या स्क्रीन दिख रही है? So one second, join again. हाँ, देखो एक बार। यार what I'm doing मतलब seriously लॉ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। Nothing. Yesterday I told them I won't come like आगे का week because यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा. And then all of a sudden they're like, shit, share this with me. Oh my god, सारे teachers को बुलाओ, group बनाओ. न्यू कोक कंज्यूमर, ये कौन से हैं? ड्यूक यूनिवर्सिटी, inoculation process. So I guess you are okay with English, right? English तो okay है ना तुम्हारा? Not really. No, but Yeah. at a certain extent you are good in English, okay? Yeah. According to my perspective, you must be good and you should be good because you're from ICSE, right? Yes. Like the basics, मतलब अगर 30 mark का English का section है, without like actually focusing on English, I can get like 15 के आसपास out of the 30 mark section without putting in effort. But then once I do start putting in effort, it also means that because the paper is so short yet it's so lengthy, it's just a 2-hour paper. Just thinking about it makes me nauseous कि इतनी पढ़ाई 2 घंटे के पेपर के लिए क्या फायदा? नहीं यार करना होगा ना। Even now I can't finish the paper in time. That's like a nothing. Which meeting is ये तो end हो गया. Okay, just tell me, ये जो status quo, the status quo, you have heard such a phrase, status quo? I have heard. Status quo. You have heard it? Yeah. What does it mean? Yeah. You must have heard this phrase during the. Have you read current affairs? Certain issues you know about India, China, Kind of. that Galwan Valley clash and all. You know that? Yeah. That time India was demanding the status quo.
So what is that status quo? Any idea? Any? You might guess also. It's okay. I don't think I remember anything to guess. Okay, no problem. Look, the status quo is nothing but the conditions which were before. For example, अभी आज के दिन चाइना आ गया, चाइना ने कुछ अल्टरेशन कर दिया बाउंड्रीज के अंदर. Okay, China did alterations. So the India was demanding that you should restore the status quo. That means the conditions which were before the alteration. Getting my point? Yeah. So the status quo is nothing but which were already existing conditions prior to the alteration. Okay, that is nothing but your status quo. Now these type of questions have been asked, so I asked you whether you are aware of it or not. Then okay, these are means easy questions. Yeah, as long as you know like everything about that one particular topic, you'll be able to solve like more than half of it. Yeah. What else? Just tell me that you are aware of current affairs, because I also have my notes, so you can just go through it also if you need. There are certain topics which are Like right now, at least for the past few weeks, okay. the only source of current affairs as such that I have been doing is like the 30-minute lecture that Shubhankar sir used to take Okay. for everybody. Okay. So other than that, I haven't been doing current affairs, like be it even practice. So I've been solving like practice questions and stuff for the other sections. Mhm. I haven't been solving those for current affairs because वो पहले के questions है. Like there's no point in solving those current affairs because they are not current affairs. They're prior affairs now. So No, but basically, you will require prior affairs only, na? You know, see, मतलब अभी देखो, when is your exam? On 18th, right? Yes. So they will ask the current affairs for approximately of, you can say, past 2 years. I guess past 2 years. So they will ask for CLAT. Yeah. Because for CDS, NDA, they ask for about prior 1 year, Yeah. 8 months to 1 year. Okay, prior. So for you, it might be like we'll take as 2 years. That means 2022 till November. पेपर कब सेट होता है? 45 days prior or anything ऐसा पता है क्या? We got our admit cards अभी 7th. 7th को you got admit cards. Yeah. मतलब पेपर on an average CLAT का कब सेट होता है? You know these things. अभी तो shut the website down on 18th like of November. So for registrations. So मतलब एक महीने पहले तक तो portal Yes, ही correct. खुलेगा. So generally UPSC what it does is it sets the paper 45 days prior, मतलब 1.5 minutes, 1.5 महीना पहले. Yeah. Okay, so that there is no alteration there, right? So अगर 45 days पहले अगर set हो रहा है तो we will consider that at least you should know the current affairs till October 2022. Yeah. That means 2021 का पूरा 2022 का पूरा October तक. That means at least whatever things had happened in India, in the neighboring countries or in the world affairs, you can say that you should know at least. Yeah. Okay, what I'll do is I'll just highlight some topics for you. Okay. Yes. I'll just first we will solve some questions, certain questions. Mainstream topics that we have, uska to एक passage पे give only, like stuff that's been going on and everybody knows about. Yes, it. yes, everybody knows That about it. that they'll give at least one of the passages will be like something very mainstream जो मतलब वैसा. What I'll do is I'll just segregate certain topics. Okay, I'll give it to you. I'll Yeah. also tell in this online lecture also. Mhm. Maybe till tomorrow. Give me time till Yeah. tomorrow. Tomorrow I'll give it to you. What you do is just go through those topics. Even I have notes. If you want, you can just click photos of it, Yeah. or else any resource you can just refer to. Yeah. Refer to any resource and just holistically go through that topic. Yeah. Because there are possibilities that those topics might come Yeah. or repeat also. Because see, 2021 I have whole current affairs of 2021. Okay, but abhi yesterday Anish sir called me. He was telling me that pura PDF bana ke bhejo. Now I have 4 books, 200 pages ki. It's not possible for me to make PDFs of these 4 books. जो भी notes तूने बनाए हैं अभी तक के, be it legal, be it any subject, CLAT के लिए, send those notes. Have you seen my? Do you really think just चीज का कोई syllabus नहीं है, उस चीज के notes are gonna be systematic? Then he's like, what have you been doing then? Like then I literally sat, I'm like, that what have I been doing? So that's okay. But he also called me. We had made notes on this tab also, I guess. Yes. कुछ बनाए थे ना हमने, rough work कुछ हाँ. किया था. So I told him that
there are certain notes we have last. saved also on tab, but ठीक है अभी पता नहीं वो कौन से tab में है. That's okay. What we will do is अभी हम थोड़े बहुत ये जो questions है इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा holistically बताता हूँ क्या है क्या नहीं, and then afterwards मैं तुमको थोड़ा बहुत मतलब वो segregation करके topics देता हूँ, ठीक है? तो whichever things which are related to अपना current affairs GK, and I'll tell you, okay? Yeah. And subjects में कौन से which all GK subjects you have everything ना? Yeah. Polity, history, geography and all. How mostly it's like, even GK, it's related to like legal aspect of it, like current affairs में भी legal passages आएंगे, Okay. logic में भी legal passages आएंगे. So you are done with that syllabus. Means at a certain extent, at least more than 15%. Yeah. You are done. Like whatever the major topics are, like be it criminal law, be it like civil law, Okay. all those like main topics, I've finished them. Like the Done. theory portion of it. Yes. बाकी जो भी है, it's like the other part, like polity, constitutional law, I still have to do. Okay. Exam is near now. Literally, like. Yes. So, okay. ये करेक्ट ऑप्शन डी भी ये वाला पैराग्राफ है क्या उसका कोविड-19 वाला पैराग्राफ. आई गेस कि कोविड-19 का जो भी है ना, यू शुड जस्ट बी थोरो विद इट. व्हाट आर द वेरिएंट्स व्हिच हैव अराइव्ड टिल डेट. ओके, वो वेरिएंट्स किसने उसका नाम दिया था, वो वेरिएंट का वो कहां पर हुआ था, आया था. ओके, दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू शुड नो. क्योंकि कैसा है ना, ये वेरिएंट्स का जो मतलब जहां पर भी आए थे, there are approximately 8 to 10 variants something. Delta, gamma, beta. I'll just reiterate the names. Delta, gamma, beta, omicron. Then there was one more which was named as, and there are certain very means vulgar names, weird names. So you should just keep in mind कि यार हाँ ऐसा कुछ नाम का था. अगर ऐसे भी आ जाए कि यार हाँ ये नाम का वेरिएंट आया था क्या, you should be aware कि हाँ बाबा ये नाम का वेरिएंट है. At least you can just go through it once. हाँ, I'll tell you the countries. Now specifics कैसा है, बहुत static data है. So even I don't remember about this, but I have written it in my current affairs book, so I'll give it to you, no doubt in that. So there are approximately 7 to 8 nations. उसमें साउथ अफ्रीका है, ब्रिटेन है, यूएस है, कनाडा है, इंडिया है. ओके, एंड वन मोर अफ्रीकन कंट्री इज देयर, एंड साउथ अमेरिकन का ब्राजील का एक कंट्री. तो ये गैमा, बीटा, अल्फा, देन ये तो सारे अपने डेल्टा. These are the names of हाँ फिजिक्स वाले नेम्स है, मैथमेटिक्स वाले नेम्स है. तो ये सारे नेम्स है, एंड ओमिक्रॉन व्हिच इज द लेटेस्ट वन. सो दैट इज आल्सो. देन व्हिच वाज दैट म्यूकोमाइक्रोसिस, यू नो, बीच में आया था वो. इट वाज लाइक your health deteriorates, like your skin becomes black, then it becomes fungus. Recently that was in news na, mucormycosis. So no, it is a very trending topic. Okay, so mucormycosis के बारे में भी थोड़ा बहुत you should know. I'm just highlighting these topics for you because अभी समझाने का टाइम नहीं. So what you do is no I'll just मोटा मैं आपको बता दूंगा क्या है, बट थोड़ा सा यू हैव टू गो इन डिटेल. मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा ना, उस पे आपको आप लिख लेना वो टॉपिक. सो कोविड-19 के बारे में यू जस्ट राइट अबाउट दैट ऑल द वेरिएंट्स which have been arrived till date, and also the countries which are involved. मींस किसने नाम दिया. अभी ऐसे पूछते हैं कि यार ओमिक्रॉन जो ये वेरिएंट है इसका नाम किसने दिया. अभी डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट कहां पर था, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट था. तो इसका नाम किसने दिया था. ओके, यूके ने दिया, यूएस ने दिया था, किसने दिया. तो ये इंपॉर्टेंट है. म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, ठीक है. म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता था ना, कि सिम्टम्स वर लाइक कि ऐसे बुखार आता था, पर्सन वाज अफेक्टेड विद फीवर, बॉडी एक, एंड हिज और हर स्किन यूज्ड टू बिकम ब्लैक. ब्लैक होता था, एंड एक बॉडी का किसी भी पार्ट में ना फंगस यूज्ड टू जस्ट गेट क्रिएटेड. यस, सो वो डिजीज था, एंड eventually the person used to die at a certain stage. Okay. So that was mucormycosis. So yes, we will read this paragraph first of all about COVID-19. Since the worldwide inoculation process is going strong, vaccine diplomacy has become a hot topic. Now what is this vaccine diplomacy? Vaccine diplomacy क्या है? Basically vaccines, how they are supposed to be
like distributed necessarily. Yes, correct, correct. That's like the just scheme Yes, that okay. बहुत सारे वो issues चल रहे थे बीच में because some countries could afford it, but then the others were also struggling, but then they couldn't just hound all those resources. They had to like give it around, and then Correct. people were thinking about when you haven't solved the issue in your own country, how are you exporting that material and stuff. So Yes. So you are very correct about it. I'll just make it more clear. Now, vaccine diplomacy is one topic. There is one more topic that is known as vaccine hoarding. Vaccine hoarding. yeah. So what happened is during 2020, when India started to make vaccines, okay, but India ka bhi population is 1.4 crore, matlab, 140 crore, sorry, Yeah. 1.4 billion. So to just make available these vaccines to 140 crore people, we needed to import that time. Yeah. Okay, because we were not making, eventually we were not making that much. Yeah. And kaisa hota tha na, you must have read about this thing also. Kya bolte hai usse? वो patent laws के बारे में you must have read about it. Yeah. Okay, what they used to do is, now UK is manufacturing one vaccine, so what they will do, they will just patent that vaccine on their country's name, Yeah. or the specific person who has been who's manufacturing that vaccine, okay, who has designed, manufactured, whatever. So अभी वो लोग क्या करते थे ना, they used to not transfer that technology to other countries in certain times. Yeah. Now अभी कैसा है ना, इंटरनेशनल लॉ के अंदर अगर ऐसा कभी कोई पैंडेमिक आ गया ना, पैंडेमिक क्या होता है, जब पूरे वर्ल्ड के ऊपर आ जाइए, Yeah. मतलब ईच एंड एवरी कंट्री सफरिंग फ्रॉम दैट स्पेसिफिक डिजीज, राइट. एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक इस सर्टेन रीजन के लिए होता है वो, ओके. पैंडेमिक इज नथिंग बट फॉर द होल वर्ल्ड, जहां पर सब जगह वही इससे लोग मर रहे. तो ये होर्डिंग में क्या होता था ना, ये लोग ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसने नहीं किया? दैट वाज लाइक यूएसए एंड यूके. दीज बोथ कंट्रीज रिफ्यूज्ड टू ट्रांसफर दिस टेक्नोलॉजी through which the vaccine should be made. They preferred that these things are not, मतलब उनकी बस की, दूसरे के बस की बात नहीं. अभी इसके अंदर दो एक क्या बोलते हैं उसे, लीड्स है हमारे पास, ये दो नेशंस हैं जिन्होंने क्या किया था कि they asked the the major country, that is USA and UK, at a global level. United Nations के अंदर India and South Africa, remember the names, India and South Africa. India and South Africa ने क्या किया, एट द यूनाइटेड नेशंस वो लोगों ने समिट्स के अंदर उन्होंने ये इशू को रेज किया कि नो, द पुअर कंट्रीज हु आर नॉट बीन provided with these vaccines, you should transfer the technology so that those poor nations will manufacture and they will provide their people. So इसके अंदर इन्होंने सीधा बोल दिया था कि no, they do not have that infrastructure, so ऐसे नहीं हो सकता. अभी ये वैक्सीन होर्डिंग में क्या होता था ना, फॉर एग्जांपल इंडिया इज आल्सो मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन्स, राइट. अभी these bigger countries what they should do is, अगर उनको लग रहा है कि हाँ ये कंट्री मैन्युफैक्चर कर सकती है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दो, प्रीवियसली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, एंड यू बाय फ्रॉम देम इन अ बल्की अमाउंट. Okay, so इससे क्या, they keep, they do not distribute, they keep with them. This is nothing but vaccine hoarding. अभी ये hoarding से क्या होता था ना, the bigger nations, wealthier nations, what they did is they kept, उन्होंने बफर बना के रखा उनके लिए, बफर स्टॉक बना के रखा. अब ये बफर स्टॉक के अंदर क्या हो गया, जो पुअर कंट्रीज थे ना, अभी कैसा होता है, यूएस यूके, these are like the permanent 5 members. Russia, China, France, they are well established, they are permanent 5 members of United Nations. Now they just speak in the United Nations Security Council, जो उनका सिक्योरिटी काउंसिल जो है पीस के लिए बात करता है, पॉवर्टी को इरेडिकेशन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बात करते हैं, आगे हम देखेंगे उसके बारे में भी है एक पैराग्राफ. सो दे स्पीक, दे जस्ट स्पीक, दे आर लाइक हिपोक्रेट्स. एक बात पे वो लोग बोलते हैं कि वी शुड हेल्प दिस पुअर नेशंस, और एक बात पे बोलते हैं कि दे डू नॉट नीड, they do not have that infrastructure. एक बात पे वो लोग ये भी बोलते हैं कि we should establish our companies in these poor nations because poor labor उनको मिल रहे हैं, migrant workers उनको बहुत cheap rate में मिल रहे हैं. अभी इंडिया के अंदर कंपनीज क्यों आती है? Because IT इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश क्यों है इंडिया? That's the basic reason. Because हमारे यहाँ पर बहुत cheap रेट में उनको वर्कर्स एम्प्लॉइज मिल रहे हैं. So on this hand, they are telling that यहाँ पर cheap labor मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर establish करेंगे. On the other hand, यहाँ पर तुमको इमरजेंसी है, because they know that now it's the time of making money. Yeah, exactly. Right. So उन्होंने क्या किया कि इनको नहीं getting. So this is nothing but ये पूरा इसका मतलब ये जियोपॉलिटिक्स पूरा है वैक्सीन होर्डिंग का. ओके, बस जस्ट रिमेंबर कि इंडिया साउथ अफ्रीका ने इनिशिएटिव लिया था ये वैक्सीन होर्डिंग और वैक्सीन डिप्लोमेसी को इरेडिकेट करने के लिए, एंड लेटर ऑन देन इंडिया आल्सो बूस्टेड इट्स सिग्निफिकेंस. उन्होंने भी फिर मैन्युफैक्चर किया. यस. सो इसके अंदर अभी सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया कौन सा था?
इंडिया ने कौन से वैक्सीन मैन्युफैक्चर किए थे बताओ? I know there's one that Pune made. That's the कौन most famous. सी बनाया पूना वाला ने? That. यूट्यूब की शॉर्ट्स What? वैक्सीन्स की Yeah, I took the shot. कौन से लिए वो तो मैं पूछ रहा हूँ. ओके नो प्रॉब्लम. तो जो आदर पूना वाला है ना, उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम है कोविशील्ड. क्या नाम है? और ओके कोविशील्ड नाम है उसका. ओके लिख लो इसको. उसका नाम कोविशील्ड है. एंड एक और कंपनी ने मैन्युफैक्चर की है, उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन. even that was there. अभी ये आप मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी ने बनाया. I'll tell you a hint also. हैदराबाद बेस्ड एक ये है वो लेबोरेटरी है. उन्होंने कोवैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है, डिजाइन मैन्युफैक्चर किया है. इट्स एन mRNA वैक्सीन also. I'll tell you. Oh, yeah. Yes. Yes. So this mRNA वैक्सीन उन्होंने बनाया है. ये RNA वैक्सीन क्या होता है? देन ये नॉर्मल DNA वाला वैक्सीन क्या होता है? कुछ पता है इसके बारे में? I know what Any mRNA idea? is. I know what DNA is and I know what RNA is. Vaccines के aspect में I don't, but in general. कैसा होता है ना कि mRNA में मतलब like a यूजुअली यस duplicate of- डुप्लीकेट yeah. मतलब उसी वायरस का डुप्लीकेट. Hmm. एंड नॉर्मल RNA DNA वैक्सीन में इट्स लाइक कि The देयर नॉट stronger हाँ one, स्ट्रॉन्गर basically, वर्जन रहता है उसका. यस. तो उसमें इतना दिमाग नहीं डालना है. बट बस बोल रहा हूँ कि mRNA वैक्सीन जो थी वो कोवैक्सीन. कोवैक्सीन इज नथिंग बट योर mRNA वैक्सीन. ओके कोविशील्ड ये कौन सी है? ये आपकी RNA वैक्सीन है, RNA DNA वैक्सीन है. तो mRNA जो है ये किसने बनाया है ये आप मुझे बताना. ठीक है. ओके यू फाइंड आउट कोवैक्सीन किसने बनाया है. यस जस्ट फाइंड आउट. हैदराबाद बेस्ड एक लेबोरेटरी है, उन्होंने बनाया है. ठीक है. तो हेलो सर. Hina ma'am told us to sit away. Please tell me not to put on Notice. clearly notice here. Okay. Yes. So should we leave from? Okay, come on, we'll go somewhere. Yeah. The pro.